Assalamu alaikum, dear student. This is Deedar Ali. I'm assistant professor in history of English literature. Today it's our second lecture of first year English syntax book board SIN. Before this lecture, we have studied reading comprehension units 1.1 Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah's speech on 11th August 1947. In this lecture, we are going to resolve exercise number first, which is words meaning. So here, without wasting time, we are heading towards exercise number 1 of first year English. Dear students, here exercise number 1 is there. Work in pairs and deduce contextually the meaning of the following word and meanings space, blank space have been given in the second column. इस एक्सरसाइज के अंदर आप में से क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स या कहीं पर भी हैं, ये एक्टिविटी एक्चुअली पेयर में आपको करनी है. पेयर मतलब कि at least any of the two students have together work on this exercise collectively. तो वर्ड मीनिंग है, वर्ड्स यहाँ पर दिए गए, उसके सामने कॉलम बी है जो कि मीनिंग के लिए स्पेस खाली छोड़ी गई है जहाँ आप उसकी मीनिंग लिखेंगे. सो हियर आफ्टर कंप्लीटिंग शेयर योर वर्क विद योर पार्टनर. विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स. देयर आर टेंस ऑफ द वर्ड दैट वी हैव टू define, explore the meanings. Number 1 is unprecedented. Unprecedented का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? जिसकी हमें कोई मिसाल ना मिले. लाइकवाइज के अनएग्जाम्पल्ड. अनएग्जाम्पल्ड का मतलब होता है जिसकी हमें कोई मिसाल ना मिले. तो कोरोना का जो एग्जाम्पल है वो सबसे यहाँ पर सूटेबल है, इसलिए कि कोरोना जो वायरस था, जो डिजीज थी, इस जैसा एग्जाम्पल हमें पहले तारीख में कभी और कहीं नहीं मिलता. Another word that we are going to discuss is sovereign. मतलब के फ्री और इंडिपेंडेंट. उसके बाद जो हमें थर्ड वर्ड मिलता है वो है द थर्ड वर्ड इज मॉन्स्टर. अब मॉन्स्टर की वैसे जो माने होती है बिग क्रिएचर, बिग वेरी फ्राइटनिंग और डेंजरस क्रिएचर. इसका मतलब होता है कि कोई भी खून ख्वार दरिंदा या बला टाइप जो चीज हो, हम उसको मॉन्स्टर. अगर हम कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग में देखें तो यहाँ पर ये चीज है कि कोई ऐसी बुरी बला या बुरा बंदा या बुरी चीज जो कि हमारे अच्छे निज़ाम को खा जाएगी, उसके लिए यहाँ पर जो वर्ड यूज हुआ है वो जिसकी माने है ए फ्राइटनिंग क्रिएचर. फोर्थ वन इज स्टार्वेशन. स्टार्वेशन की माने क्या होती है डियर स्टूडेंट? स्टार्वेशन की माने होती है कि भूख वो बदहाली से जब लोग मर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड, जिसको हम कहत कहते हैं, तो उसके लिए वर्ड हमारा स्टार्वेशन. यहाँ पर जो इसकी माने है सफरिंग कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड. इसका मतलब है कि भूख बदहाली और कहत. द फिफ्थ वर्ड इज कोलोसल. कोलोसल की माने होती है एक्सट्रीमली लार्ज आर ग्रेट. The sixth word is nepotism. I suppose nepotism is very, we can say very common word. For that, we use favoritism. For that, we use favoritism. Let's come to number 7 is onerous. Onerous word की माने dear students very difficult और burdensome. मतलब ऐसा कोई काम जो बहुत मुश्किल हो. Very difficult. Number 8 is there Titanic. Here student, Titanic also gives the meaning of big or great.
और a lot. आप सब जानते हैं कि there was one of the ship created in past history that was, we can say कि शिप ओनर था, उसकी ये राय थी कि ये शिप कभी भी समंदर के पानी के अंदर नहीं डूब सकता. However, and sink, and many hundred and thousands of the travelers are, उसमें जो सफर करने वाले मुसाफिर थे, they all drowned to death. तो टाइटैनिक में से टाइटैनिक शिप की भी एक बहुत अच्छी हमें मिसाल मिलती है. ग्रेट और लार्ज. नंबर 9 is there, ग्रे वेस्ट. डियर स्टूडेंट, ग्रे वेस्ट वर्ड की माने है वेरी सीरियस, वेरी अलार्मिंग. मतलब कि ऐसा मामला हो जाए जो हल करने के काबिल ना हो, या किसी को एक बहुत तेज कोई बुखार चढ़ जाए जो कि वो बुखार उतरने का नाम ना ले रहा हो. बेस्ट सीरियस. मोस्ट serious. Let's come to number 10. That is the last word of this exercise. It is relentlessly. Relentlessly का मतलब होता है कि continuous और restlessly. कोई भी ऐसा काम करते हैं जो कि continuously, आप मुकम्मल तौर पे मुसलसल वो काम करते रहते हैं, तो उसके लिए ये वर्ड यूज होता है. रेस्टलेसली, आप थक भी जाएं, उसके बावजूद भी एक आपका टास्क है, आप उसको मुकम्मल करते हैं. दैट वर्क इज सपोज टू बी डन relentlessly. रेस्टलेसली, बगैर आराम किए हुए, एंड कंटिन्यूअसली. Dear student, this was our last word. See you in our next lecture. Thank you and goodbye.